that I am not giving any lecture. I am just trying to motivate and share my experience. And I want to tell you, I want to motivate you, I want to make you realize that you have a lot of capability to write major and minor research project, many major and minor research project. Whatever talent you have, whatever things you learned during your master's program and during your PhD program, just put it in the words and try to write the project proposal for different funding agency. So what will be the funding agency that I will be telling you? Now you please tell me whether my slides are properly visible. I am putting on the slideshow mode. Is it visible to you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Visible. Okay. If any problem is there, you please let me know immediately, right? So that I can solve the problem and I can start. What is written on my slide? Can you please tell me? Yes, sir. How to get fundings for research in Bihar, writing minor and major research proposals? Yes, and there is some picture here which Yes, is sir. having several funding agencies name. UGC, you are very much familiar with UGC because you are a part of UGC. Then ICAR, Indian Council of Agriculture Research. Then CSIR, Center for Scientific and Industrial Research. ICSSR, Indian Council of Social Science Research. SARB, that is Science and Engineering Research Board. Ayush, Department of Science and Technology. ICMR, Indian Council of Medical Research, etc., etc. Based upon your subject, your background, you can choose any of these funding agency to submit your project proposal, right? So today we will discuss about what is a research proposal. And in this, what is a research proposal, we will discuss about what is your research interest, your hypothesis, your objective of your lifelong research goal. I will not, of course, I will be discussing little bit about your present project proposal, but it will be part of your lifelong research goal. It includes how to get funding from different funding agencies, what is the eligibility criteria for getting funds, how to frame an impressive proposal, and about different funding agencies. These things I will be discussing today. So, what is research proposal? A research proposal is a part of your long life research plan. It does not mean that you are writing a research proposal with your small project for 3 years or for 2 years. You must be having your lifelong research plan. And from where this lifelong research plan will come, whatever things you have done in your PhD, there is always a chapter in PhD, summary and conclusion, and the future prospects of this PhD work. What you will be your future prospect of the work. So whatever future prospect is there, you can based upon that you can start writing the project project proposal. It describes detail in your study. It describes the significance of the research question or a research problem which you are going to address. Identify a problem around you, the university, the institute, the college where you are working, what are the facilities available there, and related to your subject, you identify a problem in that area so that it will be easy for you to target that problem and start getting solution of that problem. And then think of a solution to address the problem. Your research proposal must answer these questions. Why your study is important? What is the state of art and science of this proposal? Are there any gaps in the literature? क्या किसी ने पहले उस पे काम नहीं किया है? How you will be filling those gaps? How to fill those gaps? So these things we will be discussing. Coming to the eligibility criteria, what are the eligibility criteria? Any permanent and regular faculty or scientist or doctors working in hospital, government hospital, or engineers in government organization or university or institute, they are eligible. A PhD is a must criteria, but any faculty who has joined immediately after MSc, he and she is having another research call that any master's degree candidate can apply for a project proposal, and then same project proposal he or she can put in his or her PhD work. He can get the registration of the PhD based upon the after getting the study leave, and you can do PhD also, and you can conduct your own experiment, your own research with your own project proposal. One faculty, one project at a time in UGC. So if a teacher desired to undertake another UGC project,
a gap of 1 year is necessary. But if a teacher wants to have more than one research project, you can apply to different funding agency. You have the opportunity to apply in different one project in DST, another project in UGC, another project in ICSSR or DBT or ICMR or ICR or Ayush, etc., etc. Before writing the project proposal, you have to answer and you have to ask yourself, what is your research interest? Your research interest must match with your background qualification, with your background or qualification. You must have some preliminary data or some background information. For that, what you will be using? When I joined this University of Hyderabad, immediately after my joining, my vice chancellor told me that, Irfan, after 2 weeks, there is a last date for project proposal submission in Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. You must submit a project proposal within these 2 weeks. I was shocked, कि sir, how can I submit within 2 weeks? I must need at least 2-3 months time. तो उन्होंने कहा कि तुम कितने बेवकूफ हो, क्यों 2-3 months टाइम चाहिए, तुमने पीएचडी कब किया है? तो मैंने कहा सर अभी अभी मैंने पीएचडी किया है, अभी अभी मेरी पीएचडी पूरी हुई है। बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने अभी अभी पीएचडी की है तो तुम्हारी पीएचडी प्रोजेक्ट में, पीएचडी में, थीसिस में, what is the application of your PhD work? Do you mention that? मैंने कहा yes sir. Then put it on that. What is the application part of your PhD? What other experiment you are suggesting to the world community, scientific community, to proceed further this work you have already written in your PhD research work, PhD thesis? What is the application? What is the future prospect of this PhD work? You have already written the same future prospect, whatever you have written, you can prepare a project proposal. Now, regarding the preliminary data, you have a huge preliminary data in the form of your thesis. So you don't require preliminary data. You don't require national status and international status, because once you are writing the project proposal, you have to write the introduction, you have to write the international status and national status, you have to write that who will be dealing about the project, etc., etc. All these informations are there in your PhD. You take all this information. 2 weeks are more than sufficient. Within 1 week you can submit it. Why you are waiting for the last date? So I am giving you the same message which my vice chancellor, Professor Sayyid Ehtesham Hasnan, at that time he has given it to me, and it was a very good suggestion that whatever PhD work you have done, whatever future prospect application part you have written in your PhD, you use that data as a preliminary data. That is your background information, and whatever you have suggested to the world community, same thing you can put in your pen and paper and objective. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है बहुत. Is it with everybody? Yes sir. No, sir. उर्दू का आवाज नहीं आ रही है सर, गिरा रहा है बहुत. सर क्लियर आवाज नहीं आ रही है सर, इंग्लिश ज्यादा यूज हो रहा है सर. क्या ज्यादा यूजर ये इको इंग्लिश थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा बताने का प्रयास करें सर. क्या फिर से बोलिए सर. यहाँ पे सभी मीडियम के लोग हैं सर. So your voice is very clear, but they need bilingual or Hindi mixed language, sir. Okay. Hindi language. Voice is clear? My voice is clear? No sir. Sir, your voice is crystal clear, sir, for me. No sir. For others? नहीं, बहुत क्लियर नहीं आ रहा है सर. नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा सर. फेड हो जाता है, लाउड हो जाता है. ऑडियो बहुत खराब आ रहा है सर, तो थोड़ा सा तेजी समझ में से. नहीं आ रहा है. अच्छा, बहुत ज्यादा इको हो रहा है क्या? जी. अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, एक बार साइन आउट होकर 2-3 मिनट के अंदर साइन इन करता हूँ फिर से, शायद कुछ फर्क पड़े. 2-3 मिनट के लिए मैं साइन आउट हो रहा हूँ. आप लोगों ने क्या सोचा है? 14-15 को पटना पहुंचना है? बिल्कुल सर, मैंने बात कर लिया हुआ है. 14-15 को पटना पहुंचिए.
अच्छा लगेगा सर। और सर शायद प्रेजेंटेशन जो है ना, 1-2 दिन में तो सर क्लियर कर देंगे। प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से जो होगा वो हम लोग ऑफलाइन मोड में करें, अपना अपना प्रेजेंटेशन बेटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो पंद्रह हमने बात कर लिया हुआ है, कल सर एग्री हैं। तो अगर अच्छा लगता है, अगर आप लोग भी आते 14-15 इकट्ठे तो। व्हाट्सएप बिल्कुल, जी ग्रुप सर, तो हम बना तो नहीं एग्री अभी हैं। तक सर। हम एग्री है। और भावना जी को मैंने बोला था व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए, भावना जी थोड़ा कर ले तो बेटर होता। हम लोग बिल्कुल आगे सर, भी कर लेते सर, कल टाइम नहीं मिला, थोड़ा बिजी। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद भी हम लोग मुझे आपस में शेयर कर सकते थे अपने व्यूज, और क्या। मुझे लगा शायद आइडिया ड्रॉप हो गया, नहीं होना है या नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या। ओके मैम। सो आई एम वेरी होपफुल कि हम 14 और 15 को हम लोग इकट्ठे मिले, और 15 को 12 बजे तक सेशन समाप्त होने की पूरी चांस है, ताकि आप लोग जहाँ लौटना है लौट सर सके। ज्वाइन हो गए। 12-2 बजे तक भी होगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, वही कह रहा हूँ, ताकि शाम को लौटने में किसी को दिक्कत ना हो। ये मैंने चाहा हुआ है कि 14 एक को बार फुल डे हो फिर से जाए। बताएंगे, मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज क्लियर है सर अब। मेरी आवाज क्लियर है? पहले यस से सर। बेहतर है मैडम? जी जी पहले सर। से काफी बेहतर है सर, आवाज क्लियर है सर। अच्छी बात है, ठीक है। तो और पहले से ठीक है सर, अच्छा है। ठीक है। मेरा स्लाइड आ रहा है? नो सर, स्लाइड तो भी नहीं आ रहा है सर। स्लाइड अगर आ जाए तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे जी सर। बढ़ूंगा। ओके सर, ओके सर। आ गया सर। आ स्लाइड आ गया। गया? यस आ सर। गया सर। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। There is a quotation that if an egg is broken from by an inside force, life ends. If an egg is broken from if egg is broken from outside force, life ends. But if it is broken from inside force, life begins. So great things always comes from inside, and you have a lot of great things. That's why you are here. There are so many candidates who has masters and PhD degree, but they don't have job, and you have qualified and you came here, right? So I was telling you to use the PhD data. Start with a good idea and put your ideas in the world. Right? And what is an idea? An idea is related to your subject, your research, which is existing in your mind. You know what is your research area. You know what you have done in your master's or in your PhD. So from that you get some idea. You have already some idea. You have to put those idea into black and white paper. Your idea must be new and original. Your idea must be supported by published paper or current information from the current development incidents in the society, which you have already worked. And you should know that whether this idea, this research, this proposal will expand the current knowledge, yes or no. If yes, then of course you should proceed the work. The proposed work must be relevant to the society. Suppose there is a forest fire in California. If you are writing a project proposal on California forest fire, it is not be useful for India. It will not be useful for the Bihar society. So that means the proposed work must be relevant to the society, especially where you are staying, where your college and university is situated, right? Suppose that there is a environmental pollution in Hyderabad, huge environmental pollution, mercury pollution, and you want to work on that. You have an environmental science background, but it will not be useful for your society. So your project will be rejected. That means the project work must be relevant to your society. Seek advice from your senior colleagues who have funding or who have successfully completed a project. Check with your college or university for basic infrastructure for the social science project and basic lab facility for the science project. There must be some room, there must be some laboratory where you can conduct your experiment, where you can implement your project proposal with your college and university. These basic infrastructure must be there, and you have to write what are the basic infrastructure available in your college and in your university to the funding agency once you are writing the project proposal. What are the essentials for proposal writing? For science and technology, you read relevant papers and collect current data. If we are writing a project proposal, suppose some project proposal come to me on in November 2022. If I find that there is no reference of 2022 and 21 paper, I will reject the paper. I will say that the principal investigator did not study the recent and relevant paper. There is no reference of 2021 and 22.
hence the project is rejected. So that means कि whenever you are submitting a project proposal, at least a few reference must be there in your proposal. Please remember, please make a note of it that if you are writing several references of 2001, 2002, 1999, 1998, 1987, or 2011, 12, but there is no reference of 2020, 21, 22, the reviewer like me will reject your proposal. So this is very important. For social science and humanities related project proposal, you must collect the historical and social data, right? Historical, social, economical, political, geographical, statistical data related to your project proposal. It does not mean that all these data you have to collect. Whatever things are related to suppose you are working on political aspects, suppose somebody is working on comparative government of last 25 or 30 years, what was the government at the time of Jagannath Mishra ji, the Congress government or Janata Dal government or combined government, and you want to go for the comparative analysis, or you want to work on geographical area of the of Bihar, और in बिहार में बहुत ज़्यादा earthquake आ रहा है या बहुत ज़्यादा flood आ रहा है, एक एरिया है जहाँ पे flood बहुत ज़्यादा आ रहा है, दूसरा एरिया है जहाँ पे सुखाड़ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे फ्लड आ रहा है वहां से एक पाइप को उस एरिया तक पहुंचाया जाए अलग अलग जगहों पे जहाँ पे हमेशा सूखा ड्रॉट आता है, सो दैट कि एक तरफ अगर फ्लड आ जाए तो उसका पानी उस जगह पे पहुंचाया जाए जहाँ पे ड्रॉट हो रहा है। तो ऐसा कुछ लिखा जाए, और बिहार की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कुछ इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट अगर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, या किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी पे अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर काम कर रहे हैं, या मौलाना मजहरुल हक के ऊपर काम कर रहे हैं, या बिहार में जो फ्रीडम फाइटर्स गुजरे हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड डेटा आपको कलेक्ट करना होगा, राइट? यू मस्ट कोट सम रेलिवेंट रेफरेंसेस। जो भी डेटा आप कलेक्ट करें बुक से या पेपर से या न्यूज़पेपर से या किसी लिटरेचर से, you must put the relevant references. This will provide you the background information for the proposal writing. So background information is very important. Minor research project funding in UGC up to 5 lakhs for 2 to 3 years, and major research project in UGC for 15 lakhs. But if you want to write more projects, suppose you are from science background and you feel that 15 lakh rupees is very small figure, for 25 lakh to 50 lakh rupees you can write a project proposal and submit to DST, that is Department of Science and Technology, SERB, that is Science and Engineering Research Board, DBT, etc., etc. Right? What are the research proposal content? We will discuss all these content in detail. Your research proposal must have a title, and this title you should write at the end of writing project proposal. ये title आपका एकदम end में होना चाहिए. Followed by introduction, followed by hypothesis and objective. आपका हाइपोथेसिस क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके हाइपोथेसिस ये है कि अगर हम कॉलेज में ये पैदा कर दें, वो चीज फैसिलिटी पैदा कर दें, तो स्टूडेंट कोचिंग जाने के बजाय कॉलेज आना शुरू कर देंगे। ये आपके हाइपोथेसिस है। उस हाइपोथेसिस को पूरा करने के लिए आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है, राइट? एंड इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हैव यू कंडक्टेड सम प्रीलिमिनरी वर्क? क्या आपके पास कोई प्रीलिमिनरी डेटा है? अगर आपने पीएचडी किया है तो वही पीएचडी के काम को प्रीलिमिनरी डेटा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और प्रोजेक्ट लिख रहे हैं जिसमें पीएचडी का काम का एक्सटेंशन नहीं है, ऐसे हालात में यू हैव टू कलेक्ट सम प्रीलिमिनरी डेटा फ्रॉम द न्यूज़पेपर, फ्रॉम द डिफरेंट एनजीओज, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द लाइब्रेरी, and from the by survey of that particular area or village or hospital or railway station or mohalla or gaon or colony, etc., etc. And then you have to have the national and international status, future prospect, what will be the future prospect, and abstract writing, of course it will be having abstract. Whatever objective के जो भी objective आपने डाला है, उस objective को पूरा करने के लिए आपकी methodology क्या होगी, what methodology you will be using, and using that methodology which you are mentioning, आपका month and year wise plan क्या होगा for 3 years. तो 3 years तक हर 6 महीने का आपको प्लान देना पड़ेगा। उसमें कैसे देना है ये मैं आपको बताऊंगा, प्लान ऑफ वर्क। और 3 साल के बाद आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि क्या इकोनॉमी में कुछ डेवलपमेंट आएगा, क्या बिहार की पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई डेवलपमेंट आएगा, क्या बिहार के कोचिंग और कॉलेजेस का जो जो रेशियो है, जो डिमांड एंड सप्लाई रेशियो है, उसमें कोई परिवर्तन आएगा, क्या बिहार के जो जो लोग जो एक तो सड़कें कम चौड़ी चौड़ी हैं और दोनों सड़क के दोनों किनारे आधी सड़क पे उधर दुकान लगा देते हैं लोग, आधी सड़क पे इधर दुकान लगा देते हैं लोग, क्या आपका प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड है जिससे कि सड़क चौड़ी हो जाएगी और जो लोग दुकान लगाते हैं बेचारों के पास कोई अदर दूसरा साधन नहीं है, उनके लिए बिजनेस का कोई और जगह आप ठीक करेंगे वगैरह वगैरह। क्या बिहार का ट्रैफिक बेहतर हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के बाद? क्या आपने जो डिजीज सेलेक्ट किया है, अगर आप बायोलॉजिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो क्या जैसे एड्स है या कोरोना है या कालाजार है बिहार में, या फाइलेरिसिस है, ये सब बीमारी में कमी आएगी बिहार में, डेंगू में कमी आएगी, मच्छर पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कोई प्रोजेक्ट ऐसा लिखना चाहते हैं आप, वगैरह वगैरह। एंड दिस विल बी फॉलोड बाय पीआई एंड कोपीआई बायोडाटा सीवी, उनका एक्सपर्टीज, डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूट फैसिलिटी। आपके प्रोजेक्ट में ये भी डालना पड़ेगा कि आपका डिपार्टमेंट क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, आपका इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्या जैसे आपको मधुबनी में काम कर रहे हैं तो मधुबनी से पटना जाना है, या पटना में काम कर रहे हैं तो पटना से मुंगेर या मुजफ्फरपुर जाना है, तो क्या आपका इंस्टीट्यूट आपके लिए कोई गाड़ी का इंतजाम कर सकता है, कैमरे का इंतजाम कर सकता है? क्या इंस्टीट्यूट आपके लिए जो बेसिक फैसिलिटी है वीडियोग्राफी के लिए वो आउटसोर्सिंग कर सकते हैं? And this will be followed by your reference and plagiarism check, and I will also discuss about the review criteria. Investigator and co-investigators, how to form a research team. Research team कैसे आप बनाएंगे? Who will lead the project? Please remember that you should lead the project. You should be the PI of the project. If you want that any senior professor should be involved in your project, put a senior professor as a co-PI, because this is your first proposal. You must be PI and he should be co-PI. He should agree to become co-PI. If he is not agreeing to become co-PI and he want that I should be PI, then ये प्रोजेक्ट आप लिख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट में सारी मेहनत आप कर रहे हैं और सारा क्रेडिट दूसरा ले जाए, ये नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करना पड़ेगा that you should be PI and the other person should be co-PI. So you must identify a team who can address this issue, and whether all team members have right skills or technical expertise related to your project. You should answer this question. Have you divided the research component or workload or different objectives among the team members? Is there any research based organization in your nearby town, city to whom you can collaborate? Suppose you are working on Vaishali, suppose you are working on Madhubani, right? तो मधुबनी के नजदीक एक बड़ा शहर है दरभंगा, क्या दरभंगा में कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जहां से आप कोलैबोरेट कर सके? या अगर आप जैसे आरा में काम कर रहे हैं, पटना आपके नजदीक है, पटना में जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के प्रोफेसर के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, ताकि आपका प्रोजेक्ट, और उसमें ये दिखाना पड़ेगा कि व्हाट कंपोनेंट यू विल बी डीलिंग इन दिस प्रोजेक्ट एंड व्हाट कंपोनेंट पटना यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी और भागलपुर यूनिवर्सिटी और any other university person will take care. That you must mention very clearly in your project proposal. You must prepare a team. You may include one or two investigators who have similar research background. If investigator lack some specific skills, a co-PI can fill the gap. Suppose you are from sociology background and you have some economics related objective also. Then you can write a project and ask some economics professor or economics person to become co-PI in that project. Or you have some historical aspect in your project, you can ask some history person to become co-PI in that project. Something like that. You must justify what will be the role of co-PI in your project. Too many investigator must be avoided. अगर मान लीजिए कि आपका नाम XYZ है और किसी मतलब रिव्यूअर को ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये जो है मैच फिक्सिंग टाइप का है, ठीक है? तो इसलिए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि बेस्ड अपॉन रिलीजन, बेस्ड अपॉन कास्ट, बेस्ड अपॉन पर्सनल रिलेशनशिप, यू शुड नॉट पुट एनीबॉडीज नेम इन द को-पीआई। अब आप जैसे पॉलिटिकल साइंस के हैं, एक आदमी ने मुझसे पूछा था आज से कुछ साल पहले कि सर मैं आपको को-पीआई बना सकता हूँ, तो मैंने कहा कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस पे प्रोजेक्ट प्रपोजल और मेरा है बायोलॉजिकल साइंस, हाउ टू जस्टिफाई
ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हूँ, लेकिन आपको फंडिंग एजेंसी पूछेगी कि भाई उसको पता चल जाएगा क्या कि इरफान भी बिहार से है, ये भी बिहार से है, इसका मतलब कुछ मैच फिक्सिंग है, आपका प्रोजेक्ट तो पहले ही कूड़े में चला जाएगा। तो इसलिए बेस्ड अपॉन पर्सनल रिलेशनशिप और बेस्ड अपॉन एनीथिंग, you must not include anybody's name as in your project proposal. A KPI must take few components of the project. If a faculty is giving an equipment or reagent for an experiment, it does not mean that he should be KPI. Title list. Now I will be starting from title. How to write the title? The title should be written at the end. Brief and able to provide the general sense of what you are going to investigate. Title should not be too long and title should not be too short. Think of a catchy title. अब मैं आपको दो टाइटल दिखा रहा हूँ. Upliftment of social, economical and educational aspect of minority and tribal community of some of the selected villages of Bihar, which is extremely backward and requires special attention from government. Development of villages of Bihar. Do you think that these titles are good? Yes or no? Please respond. No. जवाब दीजिए. Sir, no. Of course, because the first one is very big title. Yeah. इसमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि अपलिफ्टमेंट और सोशल, क्या इकोनॉमिकल, क्या एजुकेशनल एस्पेक्ट, किस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसमें. और दूसरा वाला जो है इतना छोटा है, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑफ बिहार, इसमें भी नहीं पता चल पा रहा है कि किस टाइप का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट और सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कुछ भी पता नहीं चल रहा है. तो बोथ दीज टाइटल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट एनफ. सो टाइटल शुड बी कैची. Title should be followed by introduction of the research proposal. Start with background information. State the actual issue or actual problem which you are going to address. Give some statistical data with reference. Discuss some preliminary data. मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप फंडिंग एजेंसी ये देखेगी कि आपका कोई बैकग्राउंड है कि नहीं, आपने पहले कुछ काम किया है कि नहीं. अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, करना शुरू कर दीजिए. और अगर आपका पीएचडी का डेटा नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज द सम पब्लिश डेटा, उसको प्रीलिमिनरी डेटा बनाकर फिर यू कैन राइट द प्रोजेक्ट प्रपोजल. एंड यू मस्ट कनेक्ट द प्रीलिमिनरी डेटा विद बैकग्राउंड ऑफ द प्रपोजल. आपका इंट्रोडक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन आपकी प्रीलिमिनरी डेटा से मैच करना चाहिए. इफ नो प्रीलिमिनरी डेटा इज देयर एड सम करंट और स्टैटिस्टिकल डेटा. एंड इन इंट्रोडक्शन स्टेट योर क्लियर हाइपोथेसिस. Your hypothesis must be in continuation with your background information. Give rationale behind your hypothesis. कोई reason आपको देना है hypothesis के पीछे. And must mention why this is important to investigate. आप क्यों investigate करना चाहते हैं इस चीज को, या क्यों investigate करना चाहती हैं इस चीज को, इस टॉपिक को. That must be clearly written. Too long hypothesis must be avoided. Coming to the specific objective, hypothesis should be followed by specific objectives. जो objective should be limited to 2 or 3. एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है हमारे पास प्रोजेक्ट प्रपोजल आते हैं और वो प्रोजेक्ट प्रपोजल में रिव्यूअर्स का कमेंट आता है कि ये जो आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है ये आप पूरी जिंदगी में इस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकते, 3 साल में कैसे करेंगे आप. A few sub objective may be added under the specific objective. And most important that you must promise less piece of work. छोटा काम दिखाइए. You can do more. अगर आपको टाइम मिला तो आप ज्यादा काम कर लीजिए, लेकिन अगर आपने ज्यादा लिख दिया और नहीं कर पाए तो फिर you will not complete your target. It will hamper your image and will block your future proposal. इसलिए कम काम दिखाइए, कम लिखिए और ज्यादा कीजिए. Objective should be in support of your hypothesis. The objective state the essence of proposed work in terms of what is going to be accomplished. It is followed by methodology. Objective should be followed by methodology. कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखा है, 1 या 2 या 3 या 4 ऑब्जेक्टिव जो लिखे हैं 3 साल के लिए, what methodology you are going to put in that. Step by methodology, one by one methodology. Methodology के लिए आप 2-3 पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. Step by step methodology. और उसमें always mention कि अगर आपकी methodology फेल हो गई तो you must have some alternative approach. What will be your alternative approach for each objective if the given methodology fails? Give your justification for social science and humanities proposal, why you have chosen a specific village or social issue or a specific personality or current incidents or natural calamity. For science proposal, why you are using the specific disease like dengue or filariasis or kalazar or any skin disease in Bihar
और why you have chosen a specific plant और crop, rice, wheat, barley, brinjal, guava, ये क्यों चूज कर रहे हैं आप? और लीची, why you have chosen particular animal or cell line और chemical और instrument और climate etc etc. तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा कि why you have chosen a specific village. सपोज कि किसी पर्टिकुलर विलेज में किसी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से लोगों की उम्र जो है 50 से 60 साल की उम्र में लोग मर जा रहे हैं, तो व्हाट आर द रीजन? या वहां पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका क्या बैकग्राउंड है, आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं? या कोई सोशल इशू है, किसी पर्टिकुलर विलेज में चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा है, या किसी पर्टिकुलर विलेजेस में लोग मैट्रिक तक, एक भी मैट्रिक पास करने वाला आदमी नहीं है, वहाँ के एजुकेशनल स्टेटस बहुत ही खराब है, वहाँ सिर्फ मजदूरी करते हैं, या कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, कोई पर्टिकुलर पोइट है या पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है जिसके ऊपर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, या कोई करंट इंसिडेंट्स, जैसे कि आपके गांव मोहल्ले में जैसे हाया घाट है, मैं सुनता हूँ दरभंगा के पास जो हाया घाट है और बहुत सारे एरिया है ऐसा जहाँ पे हर साल कुछ न कुछ बाढ़ आती रहती है, हर 2-3 साल पे बाढ़ आती है। तो क्या कोई ऐसा प्रपोजल हम डाल सकते हैं जिससे कि वो बाढ़ की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दे? क्योंकि बिहार में ये भी सुनने को मिलता है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे सुखाड़ पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है, पानी नहीं बरसता है, पानी न बरसने की वजह से या सूखा की वजह से किसान परेशान हो जाते हैं, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो क्या वो एरिया बिहार का जहाँ पे फ्लड बहुत ज्यादा आता है, वहां से पानी को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आता? तो या बिहार का जो पानी है उसको यूपी में, बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में क्या ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या उनको पानी की सप्लाई की जा सकती है? क्या बिहार में जो अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है उसको रोकने के लिए हम कुछ प्रोजेक्ट प्रपोजल लिख सकते हैं? जो ज्योग्राफी वाले लोग हैं, जो फिजिक्स वाले लोग हैं, वो इस पे लिख सकते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल। नेचुरल कैलामिटी, ये जो नेचुरल कैलामिटी हुई है, या अभी जो कोरोना वायरस से लोग सफर किए हैं और किसी गांव में हॉस्पिटल नहीं था और लोग जो है मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, दवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, बहुत सारे लोग इतने गरीब हैं कि दवा का इंतजाम करना तो बहुत दूर की बात, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। क्या उस गांव में कोई ऐसा इंतजाम किया जा सकता है? क्या कोई छोटी सी नदी या लेक या पोखर का इंतजाम, खुदाई की जा सकती है जिसमें 2 से 3 साल लगे खुदाई, और उसमें जो है उसके चारों तरफ प्लांट लगाया जाए, ऐसा प्लांट जिससे कुछ सब्जी उगाई जाए, और उस पोखर में, उस लेक में और उस झील के अंदर इतनी मछलियां उगाई जाएं, इतनी मछलियां पैदा की जाएं कि हर रोज कम से कम 100-200 लोगों के 200 लोग जो है सो उससे जो है फायदा हासिल कर सके, मछलियों को बाजार में बेचकर उससे फायदा हासिल कर सके और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा बेहतर हो सके। चाइल्ड मैरिजेस की प्रॉब्लम को क्या दूर की जा सकती है? क्या जो साइकोलॉजी है कि वहां के गांव के लोग जो है 8वीं पास करने के बाद आगे नहीं पढ़ते, क्या आपके पास कोई ऐसा स्कीम है, कोई ऐसा आइडिया है कि वहां के लोगों के अंदर इतना मोटिवेट करे कि लोग न सिर्फ मैट्रिक, न सिर्फ इंटरमीडिएट, बल्कि हर परिवार अपने बेटे बेटियों को कम से कम ग्रेजुएशन करवाए। ग्रेजुएशन करने के लिए उनको अगर 10-15 किलोमीटर पैदल भी चल के जाना पड़े रोजाना, तो वो जाने को तैयार हो जाए। क्या हम किसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल, एक मिडिल स्कूल और एक हाई स्कूल का इंतजाम कर सकते हैं? अगर क्या किसी हॉस्टल का इंतजाम कर सकते हैं ताकि बच्चे जो है 10 किलोमीटर पैदल न चलें और हॉस्टल में रहें? क्या कोई ऐसा इंतजाम किया जा सकता है? आपके पास बहुत सारे इश्यूज हैं, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं बिहार में जिसको सॉल्व करने के लिए आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी। अगर आपने आज शुरुआत कर दी, अगर आपने आज प्रोजेक्ट लिखा, तो यकीन मानिए आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। एंड प्लीज मेंशन, आई वांट टू टेल यू वन स्टोरी कि मैंने भी यूजीसी का प्रोजेक्ट लिखा था, और मैंने यूजीसी का प्रोजेक्ट लिखने के बाद जब मैं गया था यूजीसी में प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए थे। तो मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन 99 प्रपोजल सैंक्शन हो गए, एक प्रपोजल सैंक्शन नहीं हुआ। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि वो एक प्रपोजल मेरा था, मेरा प्रपोजल सैंक्शन नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। तो फिर मैंने पूछा भाई कि ऐसा क्या था कि सबका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, मेरा नहीं हुआ? तो यूजीसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वी रिकमेंड एंड वी प्रोमोट द पीपल कमिंग फ्रॉम local colleges and local universities or marginalized community, minority community, tribal community
एंड लोकल प्लेसेस वेयर द फैसिलिटीज आर वेरी लेस, ऐसी जगह जहाँ पे फैसिलिटीज बहुत कम है और ये लोग प्रोजेक्ट लिखकर फैसिलिटीज को डेवलप करना चाहते हैं, हम ऐसे प्रोजेक्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने करोड़ों रुपए ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को दिया है, तो आप उसी को इस्तेमाल करके अपना प्रोजेक्ट को पूरा करें। हम तो लोकल लोगों को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन चांस है कि अगर आप लोग यूजीसी में या आईसीएसएसआर में या डीएसटी में, चाहे वो साइंस का प्रपोजल हो, चाहे वो सोशल साइंस का हो, या फिर उस ह्यूमैनिटीज का प्रपोजल हो, हिंदी उर्दू पर्शियन का प्रपोजल हो, आप प्रपोजल जरूर लिखिए और उस प्रपोजल में आप 3 साल का ऑब्जेक्टिव लिखिए, उसमें आप मैन पावर मांगिए, उसमें आप कंज्यूमेबल मांगिए, और उससे आपके कॉलेज को भी फायदा होगा और उससे आपको कॉलेज को भी, क्योंकि जैसे 10 लाख का प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखा तो 10 लाख में से 10% यानी 1 लाख रुपया कॉलेज को जाता है, तो कॉलेज उसको इस्तेमाल करती है। कॉलेज का जो बेंच है या कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए पंखे हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्डिंग है, गार्डन है, लाइब्रेरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको डेवलप करने के लिए तो 10% कॉलेज को भी मिलते हैं उसमें, और बाकी जो 90% होगा वो आपको रिसर्च के लिए यूज करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो इशू है, सोशल इशू, स्पेसिफिक इश्यूज आपके बिहार में, हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, हिस्टोरिकल इश्यूज है, ज्योग्राफिकल पैटर्न है, उसके बाद नेशनल इश्यूज है, स्टेट इश्यूज है, एजुकेशनल कंडीशन है, बिजनेस है, सड़कें, ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा होती है, ट्रेनें टाइम पे नहीं चलती, ट्रेन के ऊपर, टाइमिंग्स के ऊपर, सड़कों की ट्रैफिक हटाने के लिए आप क्या, आपके पास प्लानिंग है, उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। एंड यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन व्हाटएवर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रपोजल, जो भी प्रॉब्लम बिहार में है, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। प्लानिंग फॉर द मेथोडोलॉजी, प्लानिंग प्रॉब्लम भी है। सर आपकी आवाज बहुत प्रॉब्लम है सुनने में, आवाज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सुनने में। आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसका क्या कर सकता हूँ? ये आर्यमन, ये दरवाजा खोल दो, शायद आवाज की प्रॉब्लम हो रही है इनको फिर से। ये दरवाजा खोल दो, शायद इको बंद हो जाए। इको, पता नहीं, शायद इको हो रहा होगा। मैं कैमरे के सामने अपने आप को ला रहा हूँ, मैंने अपने कमरे का दरवाजा भी खोल दिया है, तो क्या अभी आवाज में कुछ इम्प्रूवमेंट है? जी सर, अभी तो अभी आवाज में कुछ इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट है सर, क्या है? इम्प्रूवमेंट है सर, बीच बीच में फेड कर जा रही थी आवाज, अभी ठीक था। अच्छा, अभी बोला ठीक है? जाए सर आप। अच्छा ठीक है, बोल दो। वेल, मेरी स्लाइड सामने है आपके? नहीं दिख रही सर। ब्लैंक है, स्लाइड तो है बट ब्लैंक है सर। यस सर, हो गया। अभी आ रही है? यस एक सर, मिनट। यस सर, यस। फिर से चला गया सर। आगे स्लाइड्स आ गई सामने आपके? ओके, नहीं आ गया? आ गई। The slide is not coming? आ गया। Slide is coming? आ गई सर, आ गई। क्या आगे बढ़ूं मैं? है सर, है सर। जी बढ़ा जा। जी सर। ओके, प्लानिंग फॉर मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी मस्ट बी स्ट्रांग। ये दिमाग में आप रख लें, क्योंकि कई बार मोर देन 50 आपका ऑब्जेक्टिव बहुत स्ट्रांग है, हाइपोथेसिस बहुत स्ट्रांग है, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगर मेथोडोलॉजी नहीं है पूरी, तो वो फिर प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेथोडोलॉजी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सपेरिमेंट, आप सके हैं क्या एक्सपेरिमेंट रहे, और अगर आप सोशल साइंस से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, तो क्या क्या डेटा कलेक्ट करेंगे? डेटा कलेक्शन, सपोज करते हैं किसी पर्टिकुलर विलेज को आपने टारगेट किया है,
उस विलेज में चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या है, या उस विलेज में कोई बीमारी है जो बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए, या उस विलेजेस में लोगों की मौत 50 ईयर्स के अंदर हो रही है, तो आप ये कि कितने का इंटरव्यू, काफी हद तक सर्वे, इंटरव्यू क्वेश्चनर्स, क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे होंगे इंटरव्यू लेंगे, ये भी डिपेंड करता है। क्या 25 लोगों का इंटरव्यू काफी है, या 250 लोगों का इंटरव्यू चाहिए, या मोर देन 1000 लोगों का इंटरव्यू चाहिए? कितने लोगों का आप टारगेट करेंगे? स्टैटिस्टिकल डेटा को सेटिस्फाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कितने लोगों का को टारगेट करेंगे आप? कितने विलेजेस में जाएंगे? सिंगल विलेज विल बी सफिशिएंट और यू विल बी कवरिंग डिफरेंट विलेजेस? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोकस ग्रुप, कहाँ फोकस करेंगे आप? क्या किसी पर्टिकुलर कॉलेज को फोकस करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल को फोकस करना चाहते हैं जहाँ पे रोजाना पेशेंट की मौत होती है, हॉस्पिटल सही ढंग से इलाज नहीं कर पा रहा, या वहाँ पे गंदगी इतनी ज्यादा है कि अगर एक अच्छा आदमी भी जाता है तो वो बीमार पड़ के बाहर आता है? फील्ड स्टडी, या किसी पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन, या किसी पर्टिकुलर जगह पे ट्रेनें कभी टाइम पे स्टार्ट नहीं होती, या किसी पर्टिकुलर रेलवे क्रॉसिंग पे रोड पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं? What is your research field and what is your focus group? Selection of participant group, आपको एक proper selection participant group को select करना होगा, and you have to justify why you are targeting this particular group, or villages, or town, or colony, or mohalla, or school, or college, or university, or offices, or industry, or railway station, or hospital. You have to justify why you have selected a particular industry, or why you have selected a particular office in a hospital or school or college. क्यों particular उस कॉलेज को ही आप टारगेट कर रहे हैं, और क्यों उसी कॉलेज के बॉयज एंड गर्ल्स से आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं? You have to justify your target group, your participant group, and your field studies. What will be your alternate approach if your particular methodology fails? आपके पास क्या दूसरा मेथोडोलॉजी है? इस मेथोडोलॉजी को अगर फेल हो गया तो इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, and you must justify the planning of methodology that you are going to study using these particular participants or villagers or patient or a student or a specific community of your area. Step by step detailed explanation is required, and these all methodology are especially for the social science and humanities people. Must include the criteria for identification of participant, obtained participant consent for a specific study. अगर आप किसी पर्टिकुलर विलेज के किसी पर्टिकुलर कुछ महिलाओं पे अगर रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी स्टडी टीम में महिला मेंबर्स का भी होना जरूरी है, और वहां जाने से पहले उन महिलाओं से, वहां के मुखिया से, वहां के सरपंच से आपको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा कि दीज आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कुछ कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस हैं, कुछ हिडन क्वेश्चंस हैं, जिसका मैं जवाब हमें महिलाओं से, पुरुष से, लड़के से, लड़कियों से चाहिए, राइट? एंड यू मस्ट प्रेडिक्ट व्हाट प्रॉब्लम यू विल बी फेसिंग ड्यूरिंग योर स्टडी और सर्वे, ठीक है? अब किसी पर्टिकुलर विलेज में किसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर या किसी रिप्रोडक्टिव डिजीज के ऊपर अगर आप सर्वे कर रहे हैं, तो वहां पे आपके पास कुछ सेंसिटिव क्वेश्चंस भी होंगे। उस सेंसिटिव क्वेश्चंस को पूछने के लिए, स्पेशली महिलाओं से पूछने के लिए, आपके टीम में कुछ महिला मेंबर्स का भी होना जरूरी है। देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर, एंड यू मस्ट टेक द कंसेंट, एंड हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर स्टडी? डू यू हैव एनी कंट्रोल ग्रुप? आपके पास कोई कंट्रोल ग्रुप है? इस तरह का वर्क किसी और ने पहले किया है? that will be very much useful for comparison of data. And do you have support from administration for this of the site to conduct the study? आपको एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे कि वहां के सरपंच से, या वहां के मुखिया से, या वहां के एमएलए से आपको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, रिटन कंसेंट। उसके बाद आप उनके कंसेंट से आप विलेज में जाएंगे, और फिर विलेज के लोगों से कंसेंट लेकर कि ये मेरा क्वेश्चनर है, इस तरह के कुछ सेंसिटिव क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, क्या विलेज के लोग या महिलाएं या पुरुष वो लोग तैयार है? अगर वो कंसेंट दे देते हैं, और उनको आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि आपका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये आपके फायदे के लिए है, गांव के फायदे के लिए है, ताकि ये सब चीजें जो हो रही हैं, या बच्चों की मौत हो रही है, या बीमारियां हो रही हैं,
या यहाँ यहाँ की एजुकेशन कम है, इसको हम पूरा करने के लिए ये स्टडी का इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगा, स्थिति बेहतर हो जाएगी। ये वादा नहीं कर को सबमिट करेंगे, राइट। ये सारी चीजें करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाई दीज प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आर रिजेक्टेड। समटाइम्स अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आर गिवन इन द बैकग्राउंड। अब जैसे 12 पेज का प्रोजेक्ट है जिसमें से 8 पेज आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख दिया, तो 8 पेज इंट्रोडक्शन लिख दिया, वो पहले ही रिव्यूअर्स बोर हो जाएगा। इररिलेवेंट डेटा और फॉल्स डेटा, ये जान लीजिए कि जो प्रोजेक्ट आपने लिखा है और जो उसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो स्टेटिस्टिकल डेटा दे रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट का रिव्यू कर रहा है उसको भी मालूम है, क्योंकि प्रोजेक्ट उसी के पास जाएगा जिसके पास वो हिस्टोरिकल डेटा हो। वो भी आपका रेफरेंस चेक करेगा, वो भी जो रेफरेंस आपने दिया है वो रेफरेंस खोलकर चेक करेगा कि जो डेटा, जो टेबल, जो स्टैटिस्टिक्स आपने दिया है प्रोजेक्ट में, वो उसके साथ लिटरेचर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन वो चेक करेगा। इसलिए इररिलेवेंट डेटा और फॉल्स डेटा भूल कर भी आप न दें। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट सपोर्ट हाइपोथेसिस। टू मेनी ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव लिख दिया और उन्होंने कहा कि ये तो 10 साल में भी आप पूरा नहीं कर सकते, ये पूरी जिंदगी में आप पूरा नहीं कर सकते, ऐसे हालत में आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ प्रीलिमिनरी डेटा आल्सो इज वन ऑफ द रीजन टू रिजेक्ट द प्रपोजल। एंड वर्क विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड और डेटा विच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड, तो ऐसा प्रोजेक्ट भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट आई वांट टू मेंशन हियर, approximately 50% proposal are turned down because the methodology is not sound, because the methodology is very poor, right? How to impress the reviewer? Background information must be strong. Your objective should be simple and specific. Link your hypothesis with your objective, and the methodology should be feasible, possible in your area. Show the importance of proposal. Mention the available gaps which you are going to fill. Mention the future prospect of the expected outcome. ये जो आउटकम आ रहा है, इस आउटकम का ये इससे क्या फायदा होगा बिहार के लोगों को। Impact of the work in a specific field, it must be highlighted. What will be the expected outcome that you must highlight there? Must predict the result and its impact or benefit to the scientific community or social community of Bihar. In what way the project will contribute to your community? What will be the direct utilization of result or product or data generated? Clearly and briefly state the importance of the problem being addressed and potential impact. Also highlight if there is any alternate solution available in the market. Cost 500 से कम है, अगर 500 से, अगर मान लो कि 450 रुपया है तो it will not have any impact. लेकिन अगर आपकी मेडिसिन का कॉस्ट 200 रुपया या उससे कम है, then it will be having the great impact. The statement must be avoided during the project. Using this approach, we will remove the poverty completely. The problems of unemployment will be completely over. The outcome of this research will cure AIDS and cancer. After this work, there will be no illiteracy in the society. Child marriages will become history in this area. After successful completion of this work, there will be no traffic jam on the road. Environmental pollution will be completely removed. All these statements must be avoided in the project proposal, because within 3 years of proposal, we are not going to solve the issue completely. You will be the part of solving the issue. It will be a small part only. And then timelines. You have the timelines. First year में क्या करेंगे, second year में क्या करेंगे, third year में क्या करेंगे. Activities, procurement of research material, basic sampling, optimization of experiment, data collection, survey, questionnaire, and going to the villages, going to the town, going to the college and school, survey, psychological survey, questionnaire, etc., etc. All these things you will be writing, and validation of result, report writing, paper writing. ये फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक आप क्या क्या काम करेंगे, ये आपको डायग्रामेटिकली वे में आपको डालना पड़ेगा. Financial assistance and expected expenditure. How much expenditure you are expecting from the project? किताब और जर्नल पे कितना खर्च करेंगे? इक्विपमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना है आपको, जैसे आपको पीसीआर मशीन खरीदना है, ऑटोक्लेव खरीदना है, वेइंग बैलेंस खरीदना है, पीएच मीटर खरीदना है, उसके अलावा जो कैमरा है, वीडियो कैमरा है, और फर्नीचर है, और ट्रैवल करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, केमिकल्स है, ग्लासवेयर है, कंटीजेंसी है, स्पेशल कुछ सर्विस आप बाहर से हायरिंग करेंगे, उसके लिए कितना खर्चा आएगा, वगैरह वगैरह. तो ये आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए पूरा आपको बजट देना पड़ेगा. And this abstract or summary of the proposal, this should be written at the end of the proposal, right?
Write this section after writing complete proposal, 3 to 500 words. It includes outline of proposal, informative background, a specific question to be addressed, brief hypothesis and a specific objective with your approach, data and analysis procedure, significance of work and future impact. What will be the project contribute to our community? What will be the outcome? Economic development in context with economic development, health benefit, social or economical or environmental benefits. All these things should be summarized in the abstract. In the budget, suppose you are asking some manpower, project trainee or a junior research fellow or senior research fellow or project fellow or research associate. How much salary you will be giving in the first year, second year, third year? How much consumable you require? How much travel you will be traveling from your college to the site, to the research site? How much money you are expecting for traveling? Suppose you are traveling from Munger to Patna. Suppose you are traveling from Begusarai to Patna or Begusarai to Bhagalpur. How much in एक महीने में कितनी बार ट्रैवल करेंगे और क्या क्या डेटा कलेक्ट करेंगे? उस ट्रैवल के दौरान आपको नाश्ता, आपका खाना, आपके साथ जो लोग होंगे उनका रहना, उस पर कितना खर्च होगा? ऑल दिस थिंग्स, कंटीजेंसी, मेजर इक्विपमेंट, माइनर इक्विपमेंट, रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, ओवरहेड चार्जेस. सपोज कि 15 लाख का बजट बना है, इस 15 लाख में 15% या 10% कभी ये आपका ओवरहेड चार्जेस होगा जो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जाएगा. Be realistic while writing the project. Do not underestimate yourself and please do not overestimate yourself. Do not be over ambitious. Present your preliminary data honestly. Always submit a covering letter. Be realistic while writing. Use short and concise sentences. Relevant transition must be there. Transition का मतलब आपका तीसरा पैराग्राफ जो है वो दूसरे पैराग्राफ के कंटिन्यूएशन में होना चाहिए. बिल्कुल जंपिंग नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अचानक ये इंफॉर्मेशन आ रही है. There must be, all paragraph must be interlinked. Give some reference to the any published data. Use figure, graph, flowchart, table wherever it is necessary. Must avoid spelling mistake and typo errors. You may use flowchart to explain a step-by-step process. Use tables and diagram to illustrate your data and models. For reviewers' point of view, never create additional work for the reviewers. You may suggest some reviewers, but it should not be from your own organization. Prepare reviewer-friendly proposal. Please remember that reviewers cannot read your mind. Hence, do not assume that they know what exactly you want to say. And please must avoid cut, copy, paste. Because if you are cut, copy, paste, you are doing in your project proposal, ये जो proposal जिसके पास जाएगा वो उसको भी पता चल जाएगा कि ये आपने कॉपी पेस्ट किया है. It is a type of plagiarism. It is very dangerous. It may create several legal issues and sometimes it may lead to the removal of your job. So please write in your own language, and if you are using any statement, any figure, any diagram from any literature, you must give the reference of those diagram, picture and figures, etc., etc. And before writing the project proposal, please obtain the guidelines of that funding agency. The guidelines of funding agency like UGC guidelines will be different, ICSSR the guidelines will be different. So you must obtain the guidelines of your funding agency, read the guidelines proper and its format, and follow step-by-step guidelines to write the project proposal. These are the funding agency, and you can check, you can click the photo of this slide because this is very, very important for you, and you can judge yourself what is your subject background, what is your discipline, and in which subject, in which funding agency you will be having greater chance to get the funding. So you can click the photo and judge yourself, ask yourself. If you have social science background, you can apply your project to ICSSR, that is Indian Council of Social Science Research. DST, that is Department of Science and Technology, deals with basic sciences and some social science proposal also. DBT, Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Applied Biological Science based proposal. ICMR, Indian Council of Medical Research, Medical Science and Nutritional based proposal, you can submit here. ICAR, Indian Council of Agriculture Research, Agriculture Veterinary Plant based proposal. Ayush, that is Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy, Traditional Medicine related proposal. NMPB, National Medicinal Plant Board, Medicinal Plant based research. UGC, in UGC you can submit whether science or humanities or social science.
or discipline proposal. Department of Atomic Energy, Department of Research and Defense Organization, Army and Defense related proposal, CSIR, Center for Scientific and Industrial Research, Basic Science, Earth Science, Medical Engineering based proposal. So these are the different funding agency you can submit the proposal. I'll just go a little fast about the DST project proposal guidelines, and more or less same guidelines will be there for our proposal. In DST project proposal, you have the origin of proposal, maximum 1 page you have to write, review of a status, research and development in the subject, international status, maximum 2 pages, national status, maximum 1 page, importance of the project proposal. If the proposal is location specific, why you are selecting that location, you must highlight. Work plan, methodology, maximum 5 pages, expertise of the investigator, maximum 1 page, the all investigator, PI and co-PI, key publication, what are the publication you are having in the last 5 years, and the references, you must put your references. List of projects submitted or implemented by the investigator. Suppose your one project is already running, you are writing second project. So the list of all project proposal carry out by the PI or co-PI, you must write that. List of facilities, what are the facilities your college and university is having, you must write those facilities. Infrastructure facilities, and name and address of expert institution interested in the subject. You should suggest some of the faculties name who may be interested and who are working on similar areas. This should be followed by your biodata, right? In your biodata, you must highlight what are the recognition you have got, what are the award you have got, especially related to the research proposal, how many publication you have so far, and related to project proposal, how many publication you have, and must give the impact factor of your published paper and citation. And these are the review criteria, that what is the significance of this work. Does the study address an important problem? How will scientific knowledge will be advanced? Is the investigator appropriately trained? Suppose you are from physics background and you are writing an environmental pollution research, or you are having economics background and you are writing a project proposal related to psychology. That will not work. Is investigator appropriately trained? That means your subject background must be matching with your project proposal. Are the novel concept or approach? Are the aims original or innovative? Are design and method well developed and appropriate? Are the problems area addressed properly in this proposal? Does the scientific environment contribute to the probability of success? Are there unique feature of the scientific environment? So these are the review criteria. In spite of doing all those work, if your project proposal is rejected, don't be disheartened. A rejected proposal does not always mean that your idea is rejected. Please remember, must obtain reviewer's comment from the funding agency, call the program officer and check the reason, rewrite the project, revise the project, and resubmit. Address with reviewer's comment, and the second proposal will always be stronger. So that's all my presentation. There is a very good quote. If you see moon, you see the beauty of God. If you see sun, you see the power of God. And if you see the mirror, you see the best creation of God. So believe in yourself. And my sincere suggestion to all the participants of the Bihar is, you must write a proposal after joining your host college or university after this FIP program. Please, I told you in the beginning that this is not my lecture, that I am giving lecture, getting on honorarium and going away. I have emotional attachment with the academics and scientific community of Bihar. So my sincere suggestion is, please must write a major and minor research project, at least one project, and submit within 2 to 3 months. Write another project by the summer vacation and submit the another project in different funding agency. Wish you all the best. Thank you very much. Aryaman, please close the door. Thank you, sir. May I ask a question? Now you have 15 minutes time. I finished it before 15 minutes. You can ask the question. Sir, may I ask a question? Yes. Please ask me. Yeah, sir. Sir, I am Dr. Kundan Lal from Munger University. अरे वाह, मुंगेर से मैंने मैं भी मुंगेर से. Yes, sir. You are recent from DJ College, but I am posted in Munger University. Sir, I have a keen interest in anthropology, because I am professor of zoology, assistant professor of zoology,
and Yes. zoology is the part of 50% part of anthropology. So may I have chance to get project on field of anthropology? Yes, you can surely write, but you have to justify that how your research area is related to your work. Yes, sir, because जोलॉजी में जो the आपने पीएचडी 50% किया, part of आपने पीएचडी किया anthropology is जोलॉजी में related किया है, from zoology, sir. पीएचडी आपकी जोलॉजी में है, राइट? Yes, sir. हाँ, तो पीएचडी जोलॉजी में है और एंथ्रोपोलॉजी कहीं ना कहीं जोलॉजी का भी कनेक्शन है। Yes, तो sir. आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको जस्ट जस्टिफाई करना होगा कि आपका बैकग्राउंड उस प्रोजेक्ट प्रपोजल से मैच कर रहा है। यू आर राइटिंग इन द सेम फील्ड, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू राइट project proposal on plant or on tuberculosis or on psychological issue. I have already sent a proposal for a plant extract context, sir. This will be my second project, sir. Yes, that will be very good, very good. You must write, and please encourage your juniors to write the project proposal. Sure, sir, sure. Thank you, sir. All the best, Kundan Lalji. Any other question? Sir, I have a question. Sir, Yes. I have not completed my PhD yet. I am registered in PhD. So, what can I do for writing a proposal, or when I can write a proposal? Please tell me again. You are from which background? Sir, I am assistant professor in zoology. Zoology. Okay. You are Yes, not sir. PhD. Yes, sir. Okay, no issue. There is some scheme in DST and some scheme in UGC. You go to DST site and UGC site, and you can search for. There are two different type of scheme. One scheme for the general faculty who are not PhD, and you can write a project proposal, and you can work yourself, and same proposal you can use for your PhD work. Number one, and there is some another scheme for especially for women, that any woman who did not do PhD and joined the job, or there are some scheme also that any woman who did masters and then who entered into the family life and 5 years 10 years has gone, still she want to do another write another project proposal, you can write. So both scheme will be available for you. You can just check and write according to that scheme. I have given my mail ID in the chat box. I will be very happy if you must write the project proposal, submit to your different funding agency, and once you get the project proposal, just write one sentence to me that I have got a project proposal. I will be very happy. I will think that my 1.5 hour discussion and interaction with you is successful. Right? So must write, please must write a project proposal and submit within 2 to 3 months. You have the capability. Please remember that I told you several times. If you see the mirror, you can see the best creation of God, right? I am an best creation of God, and you have the capability. That's why you. And best creation of God. So you have the capability. That's why you are here. And since you are here, you have your background. Use that background information and submit the project proposal, and I'm sure that you will be getting project because you are young, you are new faculty, you are assistant professor. It will be easy for you to get the approval of your proposal either from UGC or from DST or from ICSR. So wish you all the best. Thank you, sir. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर ह्यूमैनिटीज में हम पूछना ये चाह रहे हैं कि जो पीएचडी वर्क होता है जी। उस पर क्या डबल प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है? डबल का मतलब क्या हुआ? मतलब है कि पीएचडी तो ऑलरेडी उस पर वर्क हो गया, जैसे लोग बुक पब्लिकेशन करा लेते हैं वो अलग से कराते हैं जी। तो उस पर जो मतलब है कि जो फंडिंग उस पर क्या मिल सकती है न्यू प्रोजेक्ट के लिए? आपका काम हो चुका है, आपने ऑलरेडी बार काम कर लिया है। जी 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 जो है अब ये सारी की सारी पीएचडी एक प्रॉपर फॉर्मेट में जमा होती है ग्लोबल लेवल। तो ये सारे लोगों को विजिबल होगा जब आपका प्रोजेक्ट जाएगा और ये देखेंगे लोग कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम हो चुका है, तो इस पे आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। लेकिन उस प्रोजेक्ट उस जो पीएचडी से फर्दर आपने एडवांसमेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसमें डाला है, एप्लीकेशन पार्ट डाला है, उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। थैंक यू सर।
Yes, any other question? पार्टिसिपेंट हम लोग ये कर लें, बोर्ड ऑफ थैंक्स किनका है सर, किनका है वो कर लें। अगर किसी के और कुछ क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्लीज आपका जो बैकग्राउंड है, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार के लोग ही बाहर जब जाते हैं तो दे आर डूइंग वेरी गुड पीस ऑफ वर्क, चाहे वो मेडिकल साइंस में जा रहे हों या इंजीनियरिंग साइंस में जा रहे हों या फिर बीपीएससी यूपीएससी में जा रहे हों, कहीं भी जा रहे हों, बिहार के लोग हर जगह फैले हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार में जितना साइंटिफिक और एकेडमिक का बैकग्राउंड होना चाहिए, जितना स्ट्रांग होना चाहिए, उतना नहीं है। तो ये आपके हाथ में बिहार का फ्यूचर है, आपके हाथ में एक बिहार की बहुत बड़ी डोर है। अगर आप प्रोजेक्ट लिखेंगे, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सपोज एक बार एक आदमी ने सवाल किया था कि सर अगर मैं 15 लाख या 20 लाख का प्रोजेक्ट लिखूं, यहाँ पे उसको खर्च करना पूरा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग मिजाज के होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक कॉलेज में अगर 25 प्रोफेसर हैं या 50 प्रोफेसर हैं और हर प्रोफेसर अगर प्रोजेक्ट लिखे और हर प्रोफेसर के पास 15-15 लाख का प्रोजेक्ट हो, तो कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ या कोई भी आदमी अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो ये पूरे के पूरे 50 प्रोफेसर, अगर एक आदमी को कोई टारगेट कर सकता है, एक आदमी को कोई दबा सकता है, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी को कोई नहीं दबा सकता। इसलिए अगर आप प्रोजेक्ट लिखते हैं तो पूरा का पूरा 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा 15 लाख रुपए आपको रिसर्च पे खर्च करना है, रिसर्च की एक्टिविटी पे खर्च करना है। तो अगर आप एकजुट होकर प्रोजेक्ट लिखेंगे, अगर सारे के सारे लोगों के पास प्रोजेक्ट होगा, तो फिर बिहार में ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्लेटफॉर्म, एक रिसर्च का प्लेटफॉर्म, एक एकेडमी का प्लेटफॉर्म बन जाएगा और आपके आने वाले लोग भी उसी नक्शे कदम पे चलने लगेंगे। फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप यू आर द ओनर ऑफ और यू आर द फाउंडेशन मेंबर ऑफ द बिहार साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटी। So my sincere suggestion again and again to all of you that please start writing a project proposal. आज ही लिखें, अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आपका बैकग्राउंड आपको मालूम है, आपने साइकोलॉजी में अगर या सोशियोलॉजी में एमए किया है तो आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी है, आपने पढ़ा है, आपके पास रिसर्च है, आपके पास प्रीलिमिनरी डेटा है। आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखने में 2-3 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लिखना चाहें तो 2-3 महीना टाइम ले लें, लेकिन सर एक आग्रह है सर, कुछ करें। सर जो पीपीटी है उसको सर हम लोगों के लिए सर डाल देते हैं। जी जी जी, भेज दूंगा, मैं पांडे जी को भेज दूंगा ये पीपीटी। जी जी, ओके, थैंक्स सर। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? टाइम ऑफ वोट ऑफ थैंक्स सर। हेलो, वोट ऑफ थैंक्स करिए। दिस इज टाइम ऑफ वोट ऑफ थैंक्स। हेलो, वोट ऑफ थैंक्स से पहले मैं जानना चाहूंगा किसी और पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है? नो सर, नो सर, नहीं दिया गया था तो 136 हुए हैं। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का किसी भी तरह का सवाल हो, हिस्ट्री के लिए बताइए सर कि हिस्ट्री में कहाँ कहाँ प्रपोजल भेजा जा सकता है? हिस्ट्री में आप 2 जगह भेज सकते हैं बहुत आसानी से, एक यूजीसी में भेज सकते हैं और एक आईसीएसएसआर में भेज सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में आप भेज सकते हैं। ये 2 जगह आपके लिए पेटेंटेड है, यहाँ पे आप हिस्ट्री का कोई भी प्रपोजल हो तो आप भेज सकते हैं आसानी से। आईसीएचआर में सर वो तो बताया, तो दोनों जगह भेज सकते हैं, यूजीसी में भी भेज सकते हैं और आईसीएसएसआर में भी भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। किसी और का कोई सवाल है? नो सर, नो, ओके सर। hello. Yes. Sir, very good afternoon to everyone present here. On behalf of the UGC-HRDC Patna, all the participants, and on my behalf, I, Dr. Vidyarthi Vikas, AN Sinha Institute of Social Studies, Patna, deem it a great honor and privilege to direct for vote of thanks in the 4th Faculty Development Program organized by the UGC-HRDC Patna as scheduled on 14th November to December 15th, 2022. At first, I would like to thank the Professor Atul Aditya Pandey, Director UGC-HRDC Patna, who has been conducting regular FDP refresher courses online efficiently and effectively. I heartily thank Dr. Irfan Ahmad Ghazi, University of Hyderabad, who delivered a brilliant, profound, thought-provoking, stimulating address on the subject writing research proposal. Really, the lecture delivered by Dr. Ghazi will be very helpful in formulating the proposal in favor of the society and
He also briefed about the technical and financial parts of the proposal, that how to maintain balance in financial part. Also, he extensively and intensively put his view on each steps of preparing the proposal. Dr. Ghazi covered most of the essential backdrop or steps in preparing research proposal. Definitely, he outlined all the steps to prepare the research proposal, like introduction, statement of the problem, review of literature, research question, objective, hypothesis, approach, and research methodology, sampling procedure, schedule, questionnaire, conclusion, and references. Sir, Dr. Ghazi has also thrown some light on sample and a study area also. Really, his lecture would be very helpful for the researcher based on primary and secondary data. Indeed, a researcher who is using primary data has better understanding on real issues of the society. He also hinted about the select funding agencies and their views in selecting the proposal and funding the same. I extended my thanks to UGC and Education Ministry who funded the FDP, Faculty Development Program, and all the participants who participating in this 4th Faculty Development Program. Thank you, sir. I will be meeting. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. We will meet again on 24th of this month. Another presentation on 24th. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Shukriya, sir. Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Wish you all the best. All the best.